हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 6 दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो आई हैव स्किप्ड चैप्टर 5 बिकॉज इट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस दैट इज पॉपुलर स्ट्रगल्स इन मूवमेंट, बट इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल लुक इनटू दैट। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज। पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू। बेसिकली इन द स्टोर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस political parties several times. In class 9th, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral politics, and in making and working of governments. And in this book, basically, we will look at how political parties are the vehicles of federal sharing of political power and are negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. And then we will look at some of the major political parties in India and go into depth of them. So let's start with our first topic, which is why do we need political parties? Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equals to political party. अगर हम villages वगैरह में जाएंगे ना, वो educated ना हो, but they would know everything about the political party उस area की, because they are very interested and this is a symbol of real democracy. Up. At the same time, this visibility does not mean popularity. हमेशा popularity नहीं होती है. मतलब let's say अगर लोग aware हैं तो ये नहीं कि political parties are very popular. Sometimes जो लोग हैं they tend to be critical of political parties. They think they are waste of time. वो malpractices से relate करते हैं. They relate to corruption and everything. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political divisions. इसलिए due to both of its advantages जो हम इधर पढ़ रहे हैं and disadvantages, अब हम एक क्वेश्चन पे आता है कि why do we need political parties and do we need them? So basically देखो, पहले हम पढ़ेंगे कि political parties है क्या, काम क्या करती है, फिर we will move on to कि is and are political parties desirable in a democracy. Let's understand the meaning of political party. Definitions are important, so make sure you underline them. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why the policies are better than others. बेसिकली जैसे इलेक्शन के पहले ना वो एक मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं जिसमें वो अपनी पॉलिसीज को हाईलाइट करते हैं कि हम अगर बन जाएंगे तो ये करेंगे एंड पीपल हैव दी लाइक पावर टू चूज दी रिप्रेजेंटेटिव जो उन्हें लगता है कि बेस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगा और ऐसे पॉलिसीज जो उनके इंटरेस्ट के साथ मैच करती हैं. Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partisanship. अभी मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगी. Thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds. ये बहुत ही important लाइन है, so make sure you read it once and understand it. अब मैं आपको मतलब बताती हूँ partisanship का. तो basically partisan क्या होता है? एक person जो बहुत ही strongly committed to a party है. मतलब जैसे वो एक ही साइड लेगा, वो न्यूट्रल व्यू लेगा ही नहीं, एक ही साइड लेगा. लेट्स से आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आई सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी. लेट्स से मैं बीजेपी को इतना सपोर्ट करती हूँ कि आई नेग्लेक्ट एवरी अदर पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन इंडिया. अब अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स. पहला है लीडर, सेकंड है एक्टिव मेंबर, थर्ड है फॉलोअर्स. जैसे लीडर्स लाइक बीजेपी इज नोन फॉर नरेंद्र मोदी, ये सब. कांग्रेस इज नोन फॉर लाइक राहुल गांधी एंड ऑल दीज. फंक्शंस, अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, तो मेक श्योर यू लर्न देम बाय हार्ट. अब पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन. पहला फंक्शन है पार्टीज कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर fought mainly among the candidates put up by political parties and parties select the candidates in different ways. जैसे in some countries such as USA, members and supporters of a party choose its candidates. Now, more and more countries are following this method. While countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. You can give example of both the countries and give how the
representation of candidate which has to be elected is different in both the countries. Second point, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them, as I have already explained you कि उनका different policies program अपना वो manifesto में देते हैं before the election. Each of us have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. देखो, एक let's say ये हमारा भाई एक एरिया है जहाँ सारे लोग रहते हैं, उन सबके व्यूज तो सेम होंगे नहीं. क्यों? लेट्स से उनके सोशल पोजीशंस डिफरेंट है, उनके इनकम डिफरेंट है, उसकी वजह से तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है. लेकिन ऐसे केस में हम क्या चाहते हैं? हम मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन के जाते हैं. लेट्स से यहाँ जो सारे लोग हैं दे एग्री विद वन थिंग, ये नहीं, तो मेजोरिटी में कौन से? ये वाले. सो वी विल मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू देम. ये नहीं कि हम इनको नेग्लेक्ट करें, बट जो मेजरली है हम इसको सपोर्ट करेंगे. Now, this is what parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. Ruling party मतलब पार्टी जो उस टाइम पे रूल कर रही है, मतलब जो रन कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट को फॉर्म किया हुआ है. जैसे अभी हमारी बीजेपी है रूलिंग पार्टी. थर्ड पॉइंट, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. वैसे तो लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर में भी जो लोग होता है, मेजॉरिटी ऑफ लोग होगा जो रूलिंग पार्टी के. हेंस इन अ वे दे मेक लॉज फॉर अ कंट्री. फोर्थ पॉइंट, parties form and run governments. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. It's very much evident कि parties के अंदर भी एक पूरा structure होता है, hierarchy होती है कि ये जो candidates हैं हम इनको बस इस constituency में elect करेंगे, ये वाले को हम बड़ी वाले में करेंगे, और जो top है हम उनको ministers की rank के लिए nominate करेंगे, and ये सब. It differs from party to party. अब हम पढ़ेंगे fifth point. Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power. That is, opposition और ruling party होती हैं. And by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत ही heated debate होता है कभी कभार. क्यों? Because there is an intense conflict between ruling party and opposition. तो opposition का main role क्या है? To criticize government and its policies. Sixth point, parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्टी के तीन कंपोनेंट है. पहला है लीडर, फिर मेंबर्स और फिर फॉलोअर्स. तो इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के जो उसकी ओवरऑल सपोर्ट वाले हो जाते हैं ना, दे आर रियली लार्ज इन नंबर. अब इससे क्या होता है? They launch movements for the resolution of problems faced by people, ताकि सब उस problems से aware हो जाए. Basically कभी कभार ये political move भी हो सकता है, but sometimes it can be for the betterment of our society. Now let's move on to the seventh point. Fulfill these needs that every representative government has. Hence we can say that parties are a necessary condition for a democracy. अब मैं एक बार आपको ना मेन हेडिंग्स इधर लिख देती हूँ ताकि it becomes clear कि आपको exactly लिखना क्या. देखो, पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ दैट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल. सेकंड आप लिख सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज. बेसिकली आप फंक्शंस को थोड़ा सा मोल्ड करके नेसेसिटीज में लिख सकते हो इफ यू डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट पॉइंट्स. थर्ड है कि दे प्ले अ डिसिसिव रोल. फिर लास्ट है टू गैदर पब्लिक ओपिनियन. Now let's move on to the next one. अब बात करते हैं how many parties should we have. So in a democracy, any group of citizens is free to form a political party. In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. So जो basically Election Commission है वो एक independent body है जो elections को monitor करती है in India. But not all these parties are serious contenders in the election. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win election and form the government.
अब हम मूव करते हैं कि कितनी पार्टीज डिजायरेबल है और कितनी इफेक्टिव है डेमोक्रेसी में। तो देखो पहले हम पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम के बारे में। तो इन सम कंट्रीज क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। जैसे चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दैट वे। अब हम बात करेंगे, एक बार हम पहले चाइना का एग्जाम्पल थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। देखो, ऑल्दो legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. Hence जो वन पार्टी सिस्टम इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वो लोगों को एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा है अपना पावर टू चूज वेरियस रिप्रेजेंटेटिव, वो बस एक ही ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। हेंस इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। अब हम बात करेंगे कि वी विल मूव ऑन टू डिस्कशन कि हाउ मेनी पार्टीज आर डिजायरेबल। अब बेसिकली आधे कंट्रीज में क्या होता है, जो पावर इट यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। बहुत सारी पार्टीज होगी, इलेक्शन भी कंटेक्ट करेगी, लेकिन जो पूरा पॉलिटिक्स होगा वो बस दो मेन पार्टी के ही अराउंड रिवॉल्व करेगा। एंड सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड द टू पार्टी सिस्टम, जैसे यूएस एंड यूके। जैसे यूएस एंड यूके। Now, if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with India or in alliance with others, we call it a multi-party system. अब जो इंडिया में वो है हमारा multi-party system, that is बहुत सारे parties हैं और सबके ही reasonable chance है to win seats and run the government at the central level. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. देखो कभी कभार क्या होता है, अगर हमें एक पार्टी को एब्सोल्यूट सीट्स नहीं मिलती, मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिलती, तो वो जो पार्टीज है ना वो अलायंस बना लेती है, और अगर वो जीतती है तो आफ्टर विनिंग इट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। तो when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front. For example, इंडिया में बहुत सारे alliances है, जैसे NDA, UPA and the Left Front. The multi-party system often appears very messy and leads to political instability, but at the same time, it allows a variety of interest and opinion to enjoy political representation. ये हो गया हमारा advantages और disadvantages of multi-party system, and you can write it with example of India. अब हम पढ़ेंगे इन सब में से हमने पढ़ लिया है 3 सिस्टम, उसमें से बेटर क्या है। देखो, पार्टी सिस्टम जो है ना वो एक ऐसी चीज है, वो कंट्री चूज नहीं कर सकती कि यस वी विल चूज दिस ओनली, ये करेंगे, नहीं। इट इवॉल्व्स और ये बहुत ही टाइम लेके इवॉल्व होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, आर सोशल रिलीजन डिविजन्स, आर हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड आर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। और ये सब जो है वो एक झटके में चेंज नहीं हो सकते, दे टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गेट चेंज्ड, एंड ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन्ड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों लिया? क्योंकि वो जोग्राफिकली इतना बड़ा है, उसकी डाइवर्सिटी इतनी है, रिलीजन कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वी चोज मल्टी पार्टी सिस्टम। बट एट द सेम टाइम नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज इन ऑल सिचुएशन, एज सिचुएशंस कैन चेंज, और एक ही सिचुएशन हमेशा नहीं रहती है। हेंस नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, मल्टी पार्टी, वन पार्टी हो या फिर टू पार्टी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे which relates to our national political parties. So, democracies that follow a federal system all over the world tend to have 2 kinds of political party. पहला है parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all unit of federation. ये हो गया हमारा 2 टाइप का political party, and this is the case in India as well. अब आधी कंट्रीज है जो नेशन वाइड पार्टीज है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, वो सब। बट वो नेशन वाइड पार्टीज क्यों है? क्योंकि उनका बहुत सारे स्टेट्स में दे एंजॉय पावर, एंड ये जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। इलेक्शन कमीशन के कुछ पॉइंट्स है विच हैज टू बी फुलफिल्ड, देन ओनली यू कैन गेट द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी। अब हम पढ़ेंगे क्या। देखो, while the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol. Only the official candidates of that party can use that election symbol. जैसे बीजेपी का है लोटस, कांग्रेस का वो हैंड वाला है, ऐसे ऐसे। Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for these purposes. That is why these parties are called recognized political parties.
एंड जो इलेक्शन कमीशन है, इट हैज लेट डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स and states that a party must get in order to be a recognized party. अब हम पढ़ेंगे उस क्राइटेरिया के बारे में. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये 1 मार्कर में भी आ सकता है. तो a party that secures at least 6% of the total votes in an election to legislative assembly of a state and win at least 2 seats is recognized as a state party. अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्टी के बारे में. A party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as national party. देखो हमारे स्टेट पार्टी के लिए क्या था कि 6% वोट होनी चाहिए, एटलीस्ट 6% लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 2 सीट्स चाहिए होती हैं. वाइल जो नेशनल पार्टी है उसके लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, और हमें चाहिए 4 सीट्स इन लोकसभा. याद रखना 62644. अब according to this classification there were 6 national recognized parties in the country in 2006. अगर वो आए, how many national recognized parties are there in India? Make sure you remember the year as well as along with the number. क्यों? क्योंकि अगर आप year mention नहीं करोगे तो जो numbers है it fluctuates with respect to year, so make sure you mention the year as well. अब हम पढ़ेंगे 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. तो पहले हम पढ़ेंगे INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो बेसिकली INC को हम बेसिकली बोलते हैं कांग्रेस पार्टी भी, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज फाउंडेड इन 1885 एंड experienced many split. It played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. ये जो गवर्नमेंट थी, इट वाज अ मेजर प्लेयर, मतलब ये अलोन पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इतना लंबा रूल किया था. And under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India. Secular मैं आपको already बता चुकी हूँ, मतलब एक ऐसा state which treats all religions equally. Ruling party at the center till 1977 and then from 1980 to 1989. 1989 में मैंने आपको पहले भी बताया था coalition era शुरू हो गया था. उस टाइम कोई भी single party को majority नहीं मिल रही थी. After 1989, its supports declined, but it continues to be present throughout the countries, cutting across social divisions. A centrist party, that is, it is neither rightist nor leftist. Rightist-leftist मतलब वो एक ideology को बिल्कुल ही फेवर नहीं करते, वो एक काइंड ऑफ न्यूट्रल है जो दोनों पार्टीज को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं. इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन द पार्टी spouses secularism and welfare of weaker section and minorities, and it supports new economic reforms but with a human face. And it emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha election, which were held in 2004, and currently leads the ruling United Progressive Alliance coalition government at the center. ये उस टाइम की. अब जो है इसका रूल क्या है, ऑपोजिशन पार्टी. यू कैन मेंशन इट इन द कंक्लूजन. अब इसका रूल हो गया ऑपोजिशन पार्टी एट द सेंटर. देखो इस चैप्टर में ना 2-3 क्वेश्चन बहुत ही होते हैं इंपॉर्टेंट. पहला तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. वो कोई भी आपको पॉलिटिकल पार्टी दे देगा और आपको उसको डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा. सेकंड है रिफॉर्म्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. चैलेंजेस जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. और एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेसेसिटी, कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी एंड देयर फंक्शंस. ये 5 क्वेश्चन तो आपको अपने टिप्स पे रखने हैं बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्टी दैट इज बीजेपी. उसका फुल नेम क्या है, भारतीय जनता पार्टी. तो इट वाज फाउंडेड इन 1918 while reviving the erstwhile Bharatiya Jana Sangh, and the party aims to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. And Hindutva is an important element in its conception of Indian nationhood and politics, and it wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India and a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversions. ये है इस बीजेपी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेक श्योर यू राइट इट इन योर आंसर. देखो ये जो चाहता है कि जम्मू कश्मीर, ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर हमारा इंडिया का पार्ट हो, इसलिए अभी अभी मतलब रिसेंटली जो जेके है अभी वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है, विच वॉज अपोज बाय मेनी पीपल बट इट स्टूड firm on its decision. Second,
It wants to establish uniform civil code. Uniform civil code मतलब one rule for one country. ये नहीं, जैसे इंडिया में क्या है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, इस्लाम, तो उनके मैरिजेस, उनके डाइवोर्स के जो रूल्स है वो वेरियस है, बहुत सारे, दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू ईच वन ऑफ देम. तो ये पार्टी प्रमोट करती है कि एक ही रूल होना चाहिए ऑल पीपल, दैट इज अगर मैरिज है, अगर डाइवोर्स है, तो सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए. इट शुड नॉट डिफर विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड कल्चर्स. And its support base increased in the 1990s. It was earlier limited to the north and west and urban areas. But after 1990s, the party expanded its supports in the south, east, northeast and the rural areas. And it came to power in 1998 as the leader of NDA, including several state and regional parties. But it lost the election in 2004 and is the principal opposition party in the Lok Sabha. लेकिन अब इस पार्टी को 2 कंटिन्यूस टर्म हो चुके हैं जीते हुए, एंड नाउ इट इज अ रूलिंग पार्टी. यू कैन ऐड दिस पॉइंट. अब हम पढ़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में. तो ये सारी पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टीज है, ठीक है. तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम एंड इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी. नाम ही से पता चल रहा है बहुजन समाज पार्टी. ये जो है माइनॉरिटीज, बहुजन वाले लोगों को वेलफेयर देना चाहती है, उनका मेन फोकस ये है. एंड इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पी.आर. नाइकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर. इट स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बहुजन समाज. It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like MP, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab. And it formed government in UP several times by taking the support of different parties at different times. जिससे कभी कभार ना पार्टीज अलायंस और कोलिशन फॉर्म करने से पहले ही नेगोशिएट कर ले कि अगर तुम मुझे ये जीतने दोगे आपके बाद, यू वुड कास्ट मी ऑल योर वोट्स, तुम अपना जो सपोर्ट बेस है वो मेरे लिए यूज़ करोगे तो मैं ये दूंगा बेनिफिट्स. सो सम सॉर्ट ऑफ लालच, ठीक है. So in the Lok Sabha election held in 2004, it polled about 5% votes and secured 19 seats in the Lok Sabha. अब हम बात करेंगे CPIM, that is Communist Party of India, Marxist. So Marxist जो है एक ideology है which was given by Karl Marx. As you move on to higher classes, you would study about it. So basically, this party was founded in 1964 and it believes in Marxism, Leninism and supports socialism, secularism and democracy and opposes imperialism and communalism. हम already ये terms पढ़ चुके हैं, so they are just sophisticated terms but they are really easy to understand. मैं आपको socialism के बारे में बता देती हूँ, हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा. तो basically socialism क्या होता है कि जो भी benefits है ना वो सब में equally distribute होना चाहिए, किसी particular हाथों में नहीं जाना चाहिए. It relates to socialism, that is benefit for the society. It accepts democratic election as a useful and helpful means of securing the objective of socio-economic justice in India. It enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor, factory workers, farmers, agricultural laborers, and etc. Critical of the new economic policies which allow free flow of foreign capital and goods into the country. ये अपने people का welfare चाहती है, इसलिए it is very critical जो of the policies जो foreign capital और goods को इंडिया में अलाउ करते हैं विदाउट एनी टैक्सेस एंड ऑल, क्योंकि ये उसको लगता है कि इट वुड हार्म आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 30 years. In 2004 election, it won about 6% of seats and 43 seats in the Lok Sabha. And it currently supports the UPA from outside without joining the government. मैंने आपको बताया था कि कभी कभार हम सपोर्ट करते हैं थ्रू नेगोशिएशंस. अब हम बात करेंगे CPI. It is Communist Party of India. Basically, it was formed in 1925 and it believes in Marxism, Leninism, secularism and democracy, and it is opposed to the forces of sectionism and communalism. ये सारे terms जो हैं वो almost same, मतलब communalism, sectionism already मैं बता चुकी हैं, and these are not, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे you will understand the meaning of them and they are really not very difficult terms, but वर्ड से ही डिफिकल्ट लगता है, बट द मीनिंग इज रियली वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इट एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, farmers and the poor. It became weak after the split in party in 1964, which led to the formation of CPIM,
जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको पॉइंट याद भी ना आए तो आप 1-2 पॉइंट, जैसे CPI और CPIM की जो आइडियोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो यू कैन मर्ज देम अगर याद ना आए, बट मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। Significant presence in states of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Its support base had gradually declined over the years. It secured about 1.4% votes and 10 seats in 2004 Lok Sabha election, and it advocates the coming together of all left parties to build a strong left front. ये सेंट्रलिस्ट पार्टी नहीं है जैसे कि कांग्रेस थी, ये एक ही आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है। एंड इट करेंटली सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि CPIM करती है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट नेशनल पार्टीज पे बारे में, फिर हम मूव करेंगे स्टेट पार्टीज के ऊपर। तो जो NCP है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1999, फॉर्मिंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी। एंड जो ये मेन एम है इसका, डेमोक्रेसी टुवर्ड सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। देखो, इक्विटी और इक्वालिटी, दे आर डिफरेंट टर्म्स। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक फुटबॉल मैच चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारी बॉल है, कुछ लोग हैं, लेट्स से इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये और इसकी हाइट ये है। इक्वालिटी क्या होगी? अगर हम इन तीनों को एक सेम जैसे जिस पे खड़ा हो सकता है या कोई पोडियम वगैरह देते हैं जिससे मैच देख सके, इक्वल साइज का, ये हो गया हमारी इक्वालिटी। इक्विटी क्या होगी? अगर हम छोटे वाले को ज़्यादा साइज वाला दें, बड़े वाले को कम वाला दें, या फिर ना दें, इसको उससे भी छोटा कम साइज दें, इट इज़ नोन एज इक्विटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब wants that high offices in government should be confined to naturally born citizens of the country, and it was a major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. It is a coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress. Since 2004, a member of the UPA. We are done with the national parties. अब हम मूव करेंगे about state parties. ये सारा आपको लग रहा होगा बड़ा, बट व्हेन यू विल लर्न इट, इट इज़ वेरी वेरी इजी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस जो लर्न कर लो, एंड विच आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स मूव ऑन टू स्टेट पार्टीज नाउ।